Hello. Hello. Check. Hello. Check. Check. Hello. Yeah. Yes. Very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right. Wonderful. Chalo. I'm sure we have discussed some very, very interesting concepts in residential status. Specifically, we have spent one full day time only on discussion about special cases, and we have spent one full day time yesterday only on discussion about questions on special cases. Strictly speaking, मैं कल concept से ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं. Whatever concept I taught you was only HUF company, which I actually spent only 5-10 minutes time. I was spending too much of time only on solving the questions related to that special cases, because yesterday's day before yesterday 2 days objective was very simple, that let's become perfect in residential status. All special cases should come into the light, and we should have a proper clarity of thought on how do we solve a question when a question comes in the exam from residential status. And let me honestly tell you, 99.99% question will come in the exam. I won't want to say 100% because we are dealing with somebody called ICI. We can never tell 100% for any chapter, because कब क्या आ सकता किसी को भी नहीं पता. But इतना तो है कि आएगा तो यही आएगा. That guarantee I'll give. That 100% I will tell. Are we clear, everybody? And yesterday I think that 15 lakhs question what we solved was also very interesting. Super, done. Very good. And good to see that some friends were there online and they listened online. That's what they are saying.
and couple of them replied, so I'm happy for it. Anyways, whatever reason it is, my point is very clear, my dear friends. See, ultimately we are spending time so as to make our time productive. When I say our time, your time as well as my time. Both of our time is very precious. Your time is precious because you can't waste your time now because time is short for you. And my time also precious because I'm spending time here to get some great subject. So both of our time is precious. So let's utilize it effectively. Clear, no? So let me tell one economics line that is something called optimum utilization of resources. So let's do that. You utilize, I'll also utilize, both of us. Let's have a great deal, enjoy and just learn. Are we clear, everybody? All of us? So today we'll spend some good time on discussion about something called deemed to be received in India, deemed to occur as in India. And we'll also solve some interesting questions. Clear, my dear friends? Today question आज solve करेंगे, थोड़े कल करेंगे, खत्म करेंगे कल. ठीक है बेटा? Clear, everybody? All of us? Done, my dear friends. But before we proceed, what we'll do? Revision, of course. उसके बिना तो class start ही नहीं हो सकता, impossible है. Clear? चलो guys, tell me what is section 27, 29, 225A. बोलो बेटा इंडिया क्या है? India includes territory, territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water and airspace about territory and territorial waters. दोस्तों याद है? चलो बेटा 231 percent, 234 section 3, section 4. बोलो बेटा 4 बिट सेक्शन क्या बोलता है? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? Wonderful. बोलो क्या है भाई? To avoid tax. Last one क्या है बेटा? Discontinued business. So technically there are 5 points in that. Person leaving India. What is the first one? Shipping business of non-resident. Second, person leaving India permanently or for long time. Third one, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Then, person likely to transfer property to avoid tax. What is the last one? Discontinued business. दोस्तों बराबर है? Excellent. What is section 87A? By the way, इसका एक्सेप्शन का सेक्शन नंबर क्या है बेटा? परफेक्ट. इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना? गुड. व्हाट इज सेक्शन 87A? Rebate. Rebate is only for resident individual. Rebate is only for resident individual whose total income does not exceed कितना बेटा? 5 lakh. How much is rebate? Tax payable at 12,500. Whichever is. Beta, please participate in the revision here. Come on, please. I want to do time pass in this manner by revision only, which makes sense for you and me. Correct? No? So please participate in the revision. Okay? What is section 288A? Gross total income. तो बोलो ना यार पूरा बोलो. राउंडिंग ऑफ इनकम क्या है? कौन सा इनकम है? टोटल इनकम. 288B. राउंडिंग ऑफ 112. LTCG क्या रेट है? जनरल रेट. व्हाट रेट? एक्सीलेंट. 112A. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. पूरा बोलो बेटा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on sale of equity shares or units of equity oriented fund or units of business trust through a recognized stock exchange on which STT is paid. We will tax at the rate of 10% on amount exceeding. क्या यार क्या रेजिडेंस स्टेटस में इतना खो गए क्या? फर्स्ट चैप्टर भूल ही जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है. Come on, we'll tax the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. So if the total year capital gain is 1,10,000, we'll pay tax only on 10,000. If it is 90,000, only 90,000. Correct, my dear friends? Speak out. What is section 111A? Same story, short-term capital gain. Tax at the rate of on amount exceeding. Barabar hai na? There's nothing called 1 lakh. Good. Then what about 115BB?
क्या है कैजुअल इनकम? एग्जाम्पल, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, बिग बॉस, वट एवर गेम्स. क्या रेट है बेटा? फ्लैट रेट ऑफ 30%. एक्सीलेंट. What is section 115BB? Unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure. एक बार word आया unexplained. Which section will come? 115BBE. Tax at the rate of 60% plus surcharge 25% plus cess 4%, and the effective rate will become 78%. बेटा clear है ये सबको? Everybody, are we all clear with this concept, all of us? Beautiful. Come on. Then my dear friends, come on, let me spend some time on revision of residential status. Are we ready? Please, I want the proper participation. Give me proper answer. Automatically answers will come. And I'm so happy that almost 80-90% of them are telling answers perfectly when I'm asking the question. But 10-15% of the people are slightly stammering here and there, thinking, अरे इसका आंसर क्या है? ROR भी लग रहा है, RNOR भी लग रहा है, NR भी लग रहा है, और कुछ तो लग रहा नहीं है, वो तीन ही लग रहा है. अब वो तीन में क्या बोलूं, थोड़ा डाउटफुल है. बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पूरा खत्म. पूरा खत्म इसलिए बिकॉज tax treatment for ROR is different, RNOR is different, NR is different. So clarity of thought on that classification is very, very important. Correct है बेटा? बेटा बोलो बेटा. चलो बेटा बोलो. What is section 6.1? Basic condition. For whom? Individual. कितने conditions है? Sorry? 2 conditions. बोलो. First one. He must be in India. अरे यार जोर से बोलो यार. Come on यार. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. बेटा बराबर है? Everybody clear with this point? All of us? Now tell me, what are the special cases? First of all, how many special cases are there? Huh? First one, second one is very simple. The first one, second one will become resident only if you satisfy greater or equal to 182 days. बराबर है? बोलो first वाला point क्या है? Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. बराबर है? Second point क्या है? Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Obviously, no, sir, if it's rotating only in India, then it's not leaving India only. Line only says leaving India, no? Friends, getting clarity? Excellent. Third wala case kya hai beta? This is slightly interesting. Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India, correct, no? Who comes to India for what, sir? For a visit during previous year. And this fellow will become a resident only if he satisfies 182 days or more. However, if 182 is not satisfied, still we'll call him as resident if he's there in India for 120 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. But this 120 365 story will apply only if total income other than foreign sources is more than 15 lakhs. बराबर है? And how to calculate that total income also I will discuss one question. So I gave one question where I only told total income. I gave one question where we had to calculate total income. बराबर है सर? ऐसा भी आ सकता है एग्जाम, ऐसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, whatever it is. If clarity is there, we can answer it. Are we clear? Everybody? पक्का? What is section 6.6? कितने बेटा? How many should be satisfied? Both. Only then it will become ROR. What is ROR full form? Yeah, exactly. What are additional conditions? Additional conditions number 1. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Second, he must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. So, barabar na yaar? And guys, let me honestly tell you, if you don't remember the conditions, you can't solve any problem. And that is the reason why since last 1 week, we have been doing residential status and I've been revising so much. Since last 4-5 days at least. Correct, my dear friends? And I'm revising so much these all conditions because unless we become perfect in conditions, we can't solve anything. You're getting my point? By seeing a question, we have to understand whether which condition will apply, which will not apply. And you have to remember, your brain should remember. आप मुझे ये मत बोलो कि सर लॉ भी पढ़ना है
auditing bhi padna hai. I mean, we have to study costing also, we have to study accounts also. Yes, you have to do it. You have to do it. You are in CA Inter, no compromise. We have to work hard. Clear, no? Initially, it becomes difficult. Slightly, what happens is, first 15-20 days, it becomes slightly difficult to accept because too much of content is coming to us. Initially, it looks like that, अरे यार कितना पढ़ना है यार, कितना सब कुछ हो रहा है, सब क्लासेस में हो रहा है, almost 10-11 दिन क्लासेस हो चुका है, क्या करें हम लोग? That initial thoughts will start coming. But let me tell you, initial onwards only we have to start gearing up. Especially your batch is even more next level. I already told you because of two reasons. Okay. Both? अरे मेरे लिए नहीं यार, आपके लिए बोल रहा हूं मैं. मेरे लिए तो स्पेशल है ही, ऐसा कुछ नहीं. हाँ एग्जैक्टली. सब दो प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले. नहीं, नॉट अबाउट माई सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग. Entire C and you have got two problems. Problem number one, you guys started late. That started late मतलब एक हफ्ता 10 दिन लेट नहीं है वो, almost एक महीना तक गया. Literally 1 month is gone. I mean, we can't blame anybody for that. You can't blame me or IC or anyone. Over is over. 1 month is literally gone. Second, in between festivals are too many festivals are there which will become an obstacle for us, which we have to take care of us. Correct, my dear friends? So please, I know it's a little difficult because you have to study so many subjects, revise them, keep it in brain. I know it's difficult, but you have to manage it. And we're outstation. I know that you guys are staying in hostel. No problem. I'm also outstation. चलता है, मेहनत करना पड़ता है. It's okay. अपने लिए कर रहे, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे. Correct है sir? Because some people keep saying, यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 8 से लेके शाम में 6:30 तक, 6:30 भी नहीं, 6:45 तक, 7 o'clock तक. अच्छा आजकल 7 भी हो रहा है क्या? और भी हो सकता है आगे. प्रिपेयर हो जाए यार, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ. मैं 6:30 बोलते हैं, हाँ 6:45, 7, ठीक है, whatever it is. Morning 8 से लेके 7 o'clock तो almost 11 hours we are working hard, and after that we have to spend 1-2 hours for us to revise once again. Correct, my dear friends? I know, I totally understand your effort, what you are taking, but that effort is worth it here. That effort is worth it because you will become very soon a CA final student. Not a joke. And that's the last level. उसके बाद आपको 1 साल का गैप है यार, मतलब 2.5 years का गैप है. I mean to say 1 साल तक आपको कुछ करना ही नहीं है. 1 साल के बाद तो कुछ पढ़ाई चालू करेंगे ना यार. 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ना है यार, कुछ भी नहीं पढ़ना है. समझ रहे आप मेरी बात? Guys, speak out. So that's a very promising thing which you'll enjoy a lot. Agreed? ठीक है, और क्या बोलो अभी? आप लोग ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड लोग हैं. हर क्लास में मोटिवेशन सुनते सुनते हो रहा है. And my motivation is only revision. So that only will do. Clear, no? Sir, but last line I will tell, then I'll proceed. Please. बोलो क्या? Last line is, इतना motivation, इतना ज्ञानबाजी सब faculty से सुन रहे हैं ना सर, implement करो. तो कुछ फायदा है. सबके पास सुन के वो 2 मिनट, हाँ, yes, हाँ, 2 मिनट क्लास होने के बाद, हाँ, आज पोहे खाना है या इडली सांभर खाना है, उसमें दिमाग चलाते बैठ गए तो हो गया काम. करो, एंजॉय करो. आई मीन, I'm not disputing that you should not have your food or not enjoy. You should enjoy, but not at the cost of your studies. Correct, no? Perfect. देखो सही बोला मैंने. चलो, क्या है 6-6? Additional conditions. कितने हैं बेटा? 2 conditions. What is the first one? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of what? 730 days or more during 7 years preceding the previous year. सब बराबर है? बेटा बोलो बेटा. Are we clear everybody? 100% my dear friends. चलो. Next question. What is section 62166? Residential status for HUF. बोलो बेटा क्या है आंसर? अरे याद नहीं है तो देख के तो बोलो कम से कम. मेरा चेहरा मत देखो ऐसा. Please don't see my face. You can't find answer in my face. क्या हुआ बोलो? हाँ, if the control and management is wholly or partly in India, then we call it as what? Resident. If control and management is wholly outside India, what do you call it? Non-resident. Correct, my dear friends? If it is partly in India, 10% in India, 1% in India, 3% in India, partly means 50-50. Yaad hai na ye cheez? This point I clearly told you.
partly doesn't mean 50-50. So very clearly that fellow becomes HUF becomes a resident. So in HUF, is there a concept of ROR, RNOR? In HUF, is there a concept of ROR, RNOR? Yes. What condition should be satisfied? Additional condition. Anything different or same like individual? Same like individual. Who must satisfy? Karta. Beta barabar hai? Sir, bolo yaar. And control and management refers to what? Place where decision making power is situated, not just day to day management. Sir, ये लिखे हम लोग. Not just day to day affairs, but decision making power. Correct? No? Exactly. Beta bolo next. 6264. Others. क्या है इसका आंसर? Same like HUF. Control and management is wholly or partly in India. Resident. Wholly outside India. Non-resident. बेटा लिखे ना हम लोग ये. चलो 6-3 बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2 मार्क के लिए एग्जाम में. रजिस्टर्ड स्टेटस फॉर कंपनी, क्या है आंसर? इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट irrespective of its management and all, it is always a resident. Foreign company, control and management नहीं है बेटा वो. Place of effective management. Foreign company is resident only if the place of effective management is wholly in India. So correct my dear friends. Foreign company is a resident only if the place of effective management is wholly in India. If it is partly in India, non-resident. Resident तभी बनेगा when wholly in India, not like your HUF. In HUF, even though wholly or partly, still we call it as resident. But foreign company we will call resident only if the poem is wholly in India. Guys, correct? Everybody clear with this concept, all of us? Pakka, my dear friends? Can we proceed? Done. Chalo. That is the revision what I wanted to do once again, so that we all are clear on what we are trying to understand. Make sense, everybody? All of us, my dear friends? Is residential status an important topic for exam? Yes. For practical? Definitely answer is yes. Because taxability of any person depends only upon 2 important parameters. Parameter number 1, residential status. Parameter number 2, nature of income. Whether it's Indian income or it's a foreign income. If it's Indian income, what will happen? Taxable for all. ROR, RNOR, NR, whoever it is, taxable. If it's a foreign income, it's a foreign income for whom it is taxable. ROR taxable. Then RNOR only in 2 cases. Barabar dost? Very good. Kya hai 2 cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. Guys, you have to answer, my dear friend. You have to revise. You have to answer. आप ऐसे शांत बैठेंगे तो नहीं होगा. Please. I know I'm little aggressive early in the morning, but कुछ नहीं कर सकते. वही ऑप्शन है. आपको बोलना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है इसका. Because without understanding the concept, without revising the concept, without remembering the concept, how can we solve a question? कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सर? बोलो. चलो. ROR is taxable on what income? Indian income and NR. इंडियन इनकम में तो टैक्स लगेगा ना यार. तो बोलना इंडियन इनकम इज टैक्सेबल. कम ऑन. ROR taxable on what income? Indian income and foreign income. NR only Indian income. बोलो. RNOR Indian income plus foreign income in 2 cases. क्या है 2 cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is बराबर है सर. आपको याद रखना पड़ेगा यार, प्लीज यार, कम ऑन. चलो रिवर्स क्वेश्चन. इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर whom? हाँ? ROR, RNOR, NR. Foreign income taxable for ROR and also taxable for RNOR in 2 cases. क्या है 2 cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. सर क्लियर है पक्का? बोलो. चलो
Let's start new points. Oof. I hope we are clear with all these points. I wanted to revise sometime. That's where I spent all this time. I hope it makes sense for everybody, sir. Chalo beta, come on. Now, as we discussed, my dear friends, that Indian income is taxable for what? Whether you are ROR, RNOR, NR. Still Indian income is taxable. Correct, my dear friends? And foreign income is taxable only for ROR and RNOR in two cases. Barabar hai? And we know when a person will become ROR. Do we know when a person will become RNOR? When a person will become NR? Bolo. Yes. Now, Indian income means what? Income which is accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. समझ में आ रहा है सर? What is Indian income? Indian income means income which has accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Student is asking, सर ये लिखना है क्या? लिखा हुआ है already. चेक कर लो होना बोल दो. If it's not there, you tell me. I will write your exam. It's there, no? Already we wrote this. Correct, my dear friends? What is accrue? Accrue is something like right to receive. And generally income will accrue at a place where service is performed. So if Shiva Teja is taking class in Pune, income is accruing in Pune. So if I take class in Hyderabad, income is accruing in Hyderabad. Correct, my dear friends? Beta bolo. Then what is received? Actual received. Simple. This point we need to discuss. And this concept is given by section 7. This concept is given by section 9. Bolo beta. Section 4. Charitability section. Correct, no? Speak out. Section 5. Scope of total income. लिखे थे हम लोग. Clear है? Everybody. Section 6. Residential status. 61, 62, 64, whatever it is. Correct, my dear friends? Section 7. Income deemed to be received in India. Section 9. Income deemed to accrue or arise in India. Getting clarity? Today we'll complete 7. Today we'll talk some points in 9. Some points, not everything. Some points we'll talk in 9 and we'll solve some problems. Tomorrow we'll complete the balance points in 9 and balance problems. Clear है? समझ गए आप लोग क्या करने वाले? चलो. Let's complete the first small concept called section 7. Can I proceed? Everybody? हो गया, बहुत रिवीजन कर लिया अभी. देखो अभी. Section 7 deals with what, sir? Incomes which are deemed to be received in India. Sir, I'm sure we know this word called deemed, no? Deemed is something like assumed, presumed. Even though it's not like that, it is presumed. Correct, my dear friends? Speak out. I mean, just a small example. All of you, most of you guys are lovely kids coming to the class daily basis without missing anything. But imagine one kid is there who has come all the way from outstation to Pune to take classes. Yeah? Parents are assuming that he's sitting in the class. But bhai sahab, kahin aur hai kisi aur ke saath. But according to parents, he's deemed to be what, sir? Studying, sitting in the class. Correct, no? I mean, that was not directed to you because you guys are anyways coming and listening and studying. Good. Is that clear, eh? Chalo, proceed. Listen. There are 4 points in this, my dear friends. Pretty simple, pretty comfortable 4 points. So let's see carefully. Come on. We're talking about which section? Section 7. Income deemed to be received in. And once the income is deemed to be received in India, it is what kind of income? Indian income. If it becomes Indian income, what will happen? Taxable for ROR, RNOR, NR. बराबर है बेटा? बोलो बेटा. First point. Don't write anything, just listen. Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Come on, guys. What is the line I wrote, sir? Employer contribution
to RPF in excess of 12% of salary. I'll explain to you. Listen now. Then only we'll write everything. Listen first. RPF stands for Recognized Provident Fund. In fact, my dear friends, let me take 2 minutes of your time out of your tax subject. In your law syllabus, you have got corporate and other laws. There's an act called Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, which says that whenever there is an employer or there is a company, organization, partnership firm, whatever it is, if there are 20 or more employees, how many employees, sir? 20 or more employees, they should take something called Provident Fund. Provident Fund is something like a saving scheme. Something like what scheme, sir? Where employer will make a contribution, where employee will make a contribution and employer will make a matching contribution. Matching, and generally they contribute 12% of salary. That is a standard thing what they contribute. Getting my point, everybody? So, आप लोग सुने होंगे ना PF करके बहुत लोग के पास. Everybody who's doing job generally get this PF. And Shiva Teja, once upon a time, I've done job for 2 years. When I qualified my CA, directly I didn't get into teaching and practice. I've done job for 2 years with Ernst E&Y, Ernst Young. I worked with EY for 2 years. That time I also had Provident Fund, where I contributed a part of my salary and my employer also made a matching contribution. समझ रहे आप मेरी बात? Speak out, my dear friends. Now, why do you call this Provident Fund as Recognized Provident Fund? Whenever there is a whenever there are employees of 20 or more employees, they should get Provident Fund done for the employees. Speak out. This is basically for the benefit of employees. और एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है ये चीज करना. अगर आपके पास 20 के ऊपर एम्प्लॉय है तो आपको पीएफ मेंटेन करना मैंडेटरी है. एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज दैट प्रोविडेंट फंड व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. Who recognized? Exactly. And let me tell you, my dear friends, there are 4 types of provident fund. ये सब कुछ आएगा अपने को, लिखो मत कुछ भी. All the story will come when we go to the chapter called income from salaries. When we go to the chapter called income from salaries, we'll talk about all the story. But let me introduce that now itself to you. There are 4 types of provident fund. Number 1, SPF. Number 2, RPF. Number 3, URPF. Number 4, PPF. First one क्या बोला मैंने? SPF stands for Statutory Provident Fund. This is only in case of government employees. SPF का नाम क्या है बेटा? Statutory Provident Fund, which is only in case of what? Government employees. Second one, RPF, which stands for what? Recognized Provident Fund, which is recognized by Commissioner of Income Tax. URPF, Unrecognized Provident Fund. That means what? That fellow has got 20 or more employees. He is maintaining Provident Fund, but that is not recognized by Commissioner. He did not take approval. Without approval, he is maintaining the Provident Fund. अच्छा काम कर रहा है, but approval ही नहीं है. So getting my point? अच्छा काम करेंगे तो approval होना चाहिए ना यार. If a person says in my colony, I want to put one big Ganesh, भैया पुलिस का approval लेना है. You should take the traffic police approval first. Correct? You should go to the police station, take the approval consent letter, then put whatever you want. You are doing good activity only. अरे गणेश को बेटा अच्छी काम है यार, but permission तो लेना चाहिए ना यार. So getting my point, everybody? So Provident Fund is a good scheme, but if you don't take approval from the commissioner, we call it as what? Unrecognized Provident Fund. Clear है बेटा? Speak out. Last one, Shiva Teja is contributing. PPF, Public Provident Fund. याद है बताया था आपको मैं? I'm contributing 1.5 lakh every year. बोला था मैंने आपको ये चीज. And the beauty of that PPF is interest comes which is exempt. अरे बोला था मैं आपको. I'm doing my name, my wife name. मेरा बेटा का भी पूछा था पर वो मना कर दिए. अरे सब बताया था आपको ये चीज पूरा. करेक्ट है सर? बोलो बेटा 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या है? SPF, RPF, URPF, PPF. SPF फुल फॉर्म क्या है? Statutory Provident Fund. RPF, Recognized Provident Fund. URPF, Unrecognized Provident Fund. PPF, Public Provident Fund. Correct, my dear friends? And one point let me tell you very clearly, that is in case of SPF, RPF, URPF. In case of SPF, RPF, URPF, there is something called employer contribution. In PPF, there is nothing called employer contribution. नाम ही है Public Provident Fund. कोई भी बंदा contribute कर सकता है उसमें. शिवा तेजा का कोई employer नहीं है आज के डेट पे. मैं जब जॉब किया 2 साल तब थे कोई employer. But since last 8 to 9 years, there is no employer for me. I am self-employed. समझ गए? Self-employed. I am self-employed, but I can contribute to what? PPF. नाम ही बोलता है Public Provident Fund. There is no employer contribution. Correct here?
हम इधर किसकी बात कर रहे हैं? आरपीएफ. अभी देखो पूरा लाइन. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. किसका कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा? अब मुझे एक बात बोलो. इमेजिन ए केस लाइक Shiva Teja gets into a job. Okay, I got into a company known as Tata. ऐसे कंपनी में ही काम करेंगे हम. Yeah, because more of proud feeling working in Tata. Yeah, so imagine now I got a job in Tata and they are paying me salary. Apart from salary, I am contributing to Provident Fund and Tata also is making a matching contribution. बोलो, speak out. अब मुझे एक बात बोलो सर. Whatever I am contributing to Provident Fund is from my pocket only. अरे बोलो यार, वो पैसा मेरे जेब से ही जा रहा ना, right? But whatever I am contributing, there is a matching contribution made by employer. अब मुझे एक बात बोलो, which I'll ask you one straight question. Percentage सब छोड़ दो, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा. When employer is contributing to Provident Fund, वो मेरे लिए कर रहा है ना, मुझे फायदा हो रहा है ना यार. Is it a benefit? Is it a benefit? Is employer contribution a benefit? एम्प्लॉई का मैं बोल रहा हूं, एम्प्लॉयर का बोल रहा हूं. एम्प्लॉय तो अपने जेब से जा रहा है, अपने बेनिफिट क्या है? यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग, इज इट अ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय और नॉट? इनकम टैक्सेस, वेरेवर देयर इज अ बेनिफिट, वी आर देयर एट द बैक ऑफ यू. हम साथ. आपको एक दिन एक वीडियो दिखाते, याद है? इफ टैक्स इज अ पर्सन. हाँ, आप खाना खाएंगे, हम हैं आपके साथ. रोड पे जाएंगे, हम हैं आपके साथ. ट्रिप जाएंगे, हम हैं आपके साथ. बराबर सर? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी व्हाट इज टैक्सेबल. Employer contribution to what? Recognized Provident Fund in excess of what? 12% of salary. Correct, my dear friends? Imagine Shiva Teja's salary is 10 lakh rupees. Example. Or let's say 1 crore. Shiva Teja's salary is 1 crore. Employer is example here. Shiva Teja's salary is 1 crore. Employer is contributing 14 lakhs to my PF. मुझे फायदा हो रहा है. When he is contributing 14 lakhs, is it a benefit for me? How much percent is that? 14 lakhs? 14%. How much is more than 12%? 2%. How much is that figure? 2 lakhs. That is deemed to be received in India. समझ गए आप? And which is taxable. You are getting my points? Speak out. Everybody. So I repeat once again. Listen very clearly. अभी आप चेहरा ऐसा बनाएंगे तो मुझे लिखना ही पड़ेगा फिर. सर, देयर इज ए टाटा, देयर इज शिवा तेजा. ठीक है? ER EE employer. Sir, in order to cover under salary, that ship should be there. That ship is relationship, and that relationship is not what you are thinking. Employer employee relationship. Can I proceed? Tata is paying Shiva Teja a salary of 1 crore. Okay, my dear friends. And Tata is contributing to RPF of Shiva Teja. They are contributing 14 lakhs. ठीक है? कितना contribute करे बेटा? ये कितना परसेंट है 1 crore का? 14%. एक्ट क्या बोल रहा है? ये 12% के ऊपर है क्या? है. कितना है 12% के ऊपर? 2%, which is nothing but this is taxable. समझ गए आप? अरे डिफिकल्ट है क्या? सिर्फ याद रखना इतना अपने को, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. और प्रैक्टिकली दिस केस विल नेवर कम. प्रैक्टिकली ये नॉनसेंस है कॉन्सेप्ट. ये यू माइट आस्क, क्यों सर? प्रैक्टिकली दिस कॉन्सेप्ट इज नॉनसेंस बिकॉज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 12% ऑफ सैलरी. आप पूछ सकते हैं, सर क्यों सर? पीएफ एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर शुड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी एंड ही कैन कंट्रीब्यूट मोर एट हिज ओन ऑप्शन. कोई करता क्या? व्हेन यू टेल मोर एट हिज ओन ऑप्शन, कोई भी करेगा क्या? अरे उसको जेब से पैसा जा रहा है यार, कौन देगा यार 12% के ऊपर? वही वो खुद 12% रोते रोते देगा वो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ प्रैक्टिकली. सर, इफ एनी ऑफ योर cousins, friends or sisters, brothers who's doing job in a software or somewhere, they'll get pay slips, no? उनको पूछ लो, वो खुद बताते पीएफ में जा रहा है ना 12%. वो बोलते हैं अरे यार कैसे पता आपको? समझ रहे आप? वरना आप उल्टा क्वेश्चन पूछो, पीएफ में कितना जा रहा है? वो खुद बोलेंगे 12%, अगर उनको पता है तो. ये सॉफ्टवेयर वाले को कुछ पता नहीं है. मतलब उनको इतना है कि जाओ चलाओ जावा सिस्टम, देखो आ जाओ.
मतलब उनका स्टाइल अलग है, उनको जो आता है अपने को नहीं आता है, जो अपने को आता है उनको नहीं आता, बस सबका अपना अपना टैलेंट है। समझ रहे आप? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? बोलो। पर प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है, समझ गए ना? प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो सकता है? अरे बोलो। सेकंड वाला पॉइंट, ये भी प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। सुनो, इसमें पैसे डाले ना यार आरपीएफ में। सर आरपीएफ में पैसे लगाए नहीं लगाए? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ in excess of 9.5% per annum, of course. So getting my points? That means if sir RPF में पैसे लगा रहे हैं यार, if we get 10% interest, how much percent interest? Law is telling I will tax only 0.5%. If you get 11% interest, I will tax 1.5%. ये भी practically impossible है, because RPF में practically आता है 7.2% interest. तो 9% आने का सवाल ही नहीं है। तो जब टैक्स कब होगा? ओनली व्हेन इट इज मोर देन 9.5। यू माइट आस्क, फिर ये सब कॉन्सेप्ट क्यों है सर? ये वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 22, एंड इन बिटवीन देयर वर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 11%, 12% ऑल्सो। दे टोल्ड व्हाट, अगर 11% इंटरेस्ट आ रहे हैं तो 1.5% हम टैक्स करेंगे। समझ रहे आप? पर 11% इंटरेस्ट किस में आ रहा है? अगर 11% इंटरेस्ट है तो सब बंदा पूरा पूरा का पूरा पैसा पीपीएफ आरपीएफ में डालेगा पूरा, करेक्ट? नो, 7% के लिए श्वेतया छोड़ रहा नहीं है उसको पीपीएफ को, बिकॉज़ इट्स टैक्स फ्री। यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो विच सेक्शन में टॉकिंग अबाउट? सेक्शन 7, टाइटल क्या है बेटा? इनकम्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन, बोलो व्हाट इज द नेम? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Second one, interest credited in RPF in excess of 9.5% per annum. Is it clear? Everybody? Third point. Employer contribution. This is practically possible. What is that? You listen. Employer contribution. किसका contribution बेटा? Employer contribution to pension scheme of central government notified under section 80 CCD. CCD doesn't mean cafe coffee day, वो section number है CCD है, already मैंने बताया आपको। So getting my point everybody? Employer is contributing to what? Pension scheme of central government, that is also deemed to be received in India. So getting my points? ये बहुत common है sir, especially in central government employees. This is very common. Especially in what employees sir? Central government employees. This concept is very very common. Sir आपको लगता है central government employee tax pay करेगा? Yes. State government employee? Yes. But उनको अलग exemptions है थोड़े, but generally they are supposed to pay. Correct my dear friends? चलो how many points done? What first point? Employer contribution to RPF in excess of what? 12% of salary. Second, interest credited in RPF in excess of 9.5% per annum. Third one, employer contribution to pension scheme of central government notified under which section? 80 CCD. Practically they also call this as NPS, National Pension Scheme. That's how they call it. More detail we'll talk when I go to deductions. Clear? Then last point in section 7 हो गया। Transfer balance from URPF to RPF. URPF to what sir? RPF. What is the meaning of this point? I'll explain to you. Okay? Let me take 5 minutes of your time and explain this concept so that you get full clarity on what I'm trying to talk about. Clear my dear friends? Take an example like this. There is an employer, there is an employee. ठीक है बेटा? Employee is contributing 1 lakh per annum. Employer is contributing 1 lakh per annum. And this is RPF. इधर से 1 लाख आ रहा है, इधर से 1 लाख आ रहा है, तो साल में कितना accumulate हो रहा है सर? 2 lakhs. Speak out. And this fellow
एम्प्लॉय का सैलरी है 10 lakhs. एम्प्लॉय सैलरी कितना है बेटा, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 lakh. दैट मीन्स व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी, स्पीक आउट. सो दिस 1 lakh इज नॉट टैक्सेबल. बराबर है, वाई, it's not more than 12% of salary. Speak out. Right. On this 2 lakh, will interest come? Speak out. Assume interest rate is 8%. What will happen? Not taxable. So getting clarity? Speak out. Now finally, on withdrawal, one fine day you will withdraw, no? Speak out. Everybody. One fine day you will withdraw or not? Speak out. Law told when you withdraw, if service is rendered for more than 5 years, then not taxable. Service rendered for more than 5 years, then what, sir? Not taxable. And if service is less than, then it is taxable. Let me honestly tell you, Shiva Teja paid tax on withdrawal because I need to service more less than 5 years. You're getting my point, everybody? Speak out, all of us. Now the story is, how is it taxable? When we say it is taxable, law told when you withdraw, we'll divide your money into 4 parts. When you're withdrawing, you will divide your money into 4 parts. What are the 4 parts? First, हमने जो contribute किया, speak out. And interest on employee contribution, employer contribution, interest on employer contribution. यही तो पैसा है ना यार. What we contributed and interest on what we contributed. What employer contributed, interest on what employer contributed. Correct or not? Speak out. Law is telling this is not taxable. Q. अपना पैसा अपने को वापस आ रहा है तो टैक्स क्यों आएगा सर? स्पीक आउट. एंड लॉ इज टेलिंग दिस वी विल टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड दिस टू टुगेदर वी विल टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम. दिस इज हाउ दे विल टैक्स. इफ सर्विस स्टैंडर्ड इज लेस देन exactly. So getting my point, everybody? Speak out. Now listen carefully. When we talk about URPF, अब मैं किसका बोला था स्टोरी आपको? RPF. Same story I'll write. Listen carefully, sir. There is an employer. There is an employee. He is giving salary of 10 lakhs. He is giving salary of 10 lakhs. And this fellow, he is contributing to PF 1.4 lakh. He is also contributing to PF 1.4 lakhs. How much is excess? Excess means greater than 12%. कितना बेटा? कितना है वो? How much is the amount? How much is the amount? बेटा बोलो बेटा. How much is the amount? 20,000. But loss is not taxable. Loss is not taxable. Listen very clearly. Don't worry, I'll explain to you. दोनों मिलके आए 2.8 lakhs, on which you are getting interest of 11%. In excess of 9.5% is how much, sir? This is also not taxable. This is also what, sir? Not taxable. But on withdrawal, on what, sir? Irrespective of number of years of service. बोलो बेटा क्या लिखा मैंने? Irrespective of number of years of service, it is taxable. It is what, sir? Exactly. So getting my point, everybody? Speak out. Now let me put like this, which you will get more clarity. Yeah? Listen very clearly, sir, which I'll make you write also now.
RPF, URPF. Listen very clearly, please. Employer contribution in excess of 12% is taxable. Here not taxable. Beta barabar hai? Speak out. Interest in excess of 9.5% is what, my dear friends? Here it says not taxable. तो फर्क समझ रहे यूआरपीएफ में आरपीएफ में? आपको लगता होगा अरे सर टू मच है ना यार, ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसको तो टैक्स करना चाहिए. गवर्नमेंट बोल रहे बेटा इसको हर साल टैक्स नहीं लगाएंगे, बट जिस दिन विड्रॉ करेगा ना छोड़ेंगे नहीं, फुल मारेंगे. So getting clarity everybody? They are very clearly telling that we will not tax every year, but जिस दिन विड्रॉ करेगा बेटा हो गया. अगर वो बोलेगा 5 साल के ऊपर सर्विस है तो क्या टैक्स पे कर, 10 साल सर्विस है तो क्या टैक्स पे कर. You're getting my point everybody? Speak out. Withdrawal क्या है बेटा आंसर इधर? सर्विस greater than 5 years not taxable. Service less than 5 years taxable. इधर क्या है बेटा? Straight away taxable. So speak out. And when I say taxable, 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 how do we tax? Employee contribution not taxable. Interest on employee contribution, income from other sources. Employer contribution plus interest on employer contribution. We will tax under what, my dear friends? Income from salaries. सबको समझ में आ रहा है सर बात? Everybody please speak out. Are we clear with this concept everyone? So please reply. Everybody. Now I'll come back to my section 7. Then I'll make you write also all the story. Chalo, kya likhe beta? Section 7, what is that we are trying to talk about? Income deemed to be received in India. That means once we say that they are deemed to be received in India, they become what kind of income? Indian income. Once it becomes Indian income, what will happen? Taxable for ROR, taxable for RNOR, taxable for NR. Clear है बेटा? कितने पॉइंट है? सिर्फ 4 पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है. पहले वाला पॉइंट क्या है बोलो? Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Interest rate in excess of 9.5%. Correct, my dear friends? Third one, employer contribution to pension scheme of central government notified under section 80CC-D. यार बोलो यार please sir. What is third point? Employer contribution to pension scheme of central government notified under which section? 80CC-D. Last one, ये बंदा क्या कर रहा है पढ़ो? Transfer balance from URPF to. What was happening basically is that there is a URPF. After 7-8 years, that fellow took approval. And URPF became, then he has withdrawn. If then he has withdrawn, it becomes exempt, no? Speak out. Act बोल रहा है, जब आप convert करेंगे ना URPF से RPF को, URPF से RPF convert करेंगे ना यार, then we will tax. What we will tax is employer contribution plus interest on such contribution. What will tax is only employer contribution which is more than 12% of salary. अब मुझे बोलो, you please see here, you please see this point and then give me answer. You will get full clarity. एक example अच्छा दिया था मैं आपको बीच में. See this question. See this example, sir. Sir, in this example, if you see carefully, what is the salary of the employee? Beta, bolo beta, 10 lakhs. How much is contributed by employer to PF? 1.4 lakh. Is it more than 12% of salary? Is it more than 12% of salary? 100% it is very clearly evident that it is more than 12% of salary. If this would have been RPF, if this would have been RPF, you would have taxed at 20,000. You would have taxed at 20,000. But did you pay tax? No. By telling what? URPF, हर साल कुछ भी नहीं होगा, लास्ट में ही मारेंगे हमको पकड़ के. You're getting my point, everybody?
सो 20,000 पे अगर आरपीएफ होता तो टैक्स पे करते थे ना आप लोग? यूआरपीएफ बोल के टैक्स पे कर रहे क्या? आप ये क्या कर रहे? 5 साल के बाद, 6 साल बाद, 7 साल के बाद, वन फाइन डे यू आर टेलिंग आई विल कन्वर्ट फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ. बेटा कन्वर्ट कर, बट इतने साल से अगर आरपीएफ होता था, some amount would have been taxable. All that amount pay tax now, and that is deemed to be received in India. So logic only, no? Why logic? I'll tell you the reason. ये यूआरपीएफ है बॉस, हर साल 20,000 रुपए टैक्स पे नहीं कर रहे, बराबर है? 7 साल के बाद यूआरपीएफ आरपीएफ हो गया, and after it became RPF, you have withdrawn. Once you withdraw, what you will tell? RPF tax free. बोलेंगे ना यार, बोलो. बट अगर पहले से आरपीएफ होता था, you would have paid tax every year on some amount. But because it was URPF, that some amount missed out tax. Now what law is telling that day when you convert from URPF to, what would have been taxed if it would have been RPF from the beginning? Calculate that figure, pay the tax now. समझ गया? अरे बोल रहे हो यार? Are we clear with this point, everybody? What would have been the tax you would have paid if it would have been RPF? That amount you pay tax now. समझ गए? बेटा पक्का क्लियर है सबको? So very very interesting concept, because see directly पढ़ते जाएंगे, ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. क्या है भाई वो? अब यूआरपीएफ क्या है, आरपीएफ क्या है, वो क्यों आ रहा है, वो क्यों कन्वर्ट कर रहा है, उसके पीछे कुछ लॉजिक तो है ना यार. अब आप पूछ सकते हैं सर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? अप्रूवल ले लिया कमिश्नर का, बता देना आपको ऑलरेडी में. कमिश्नर का अप्रूवल नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? यूआरपीएफ. कमिश्नर अप्रूवल आ गया तो क्या बोलेंगे उसको? आरपीएफ. दोस्त बराबर है ना? अगर ये आरपीएफ होता तो 20,000 रुपए टैक्स पे करते थे ना. आप टैक्स पे किए क्या? नहीं करे. क्या बोल के पे नहीं करे? यूआरपीएफ. आप 2 साल के बाद उसको आरपीएफ बना दिए, तो पिछले 2 साल आपको टैक्स कुछ पे करना चाहिए था. अगर आरपीएफ है तो वो पे करे क्या? अभी पे करो उसको. एंड दैट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडियन इनकम. एम्प्लॉयर 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 कौन मेंटेन कर रहा है भैया? प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर वही लेगा अप्रूवल, अप्रूवल वही लेगा. एंड प्रैक्टिकली सर एवरी फेलो, ऑल बिग कंपनीज यू टॉक, एवरी फेलो इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ओनली. कोई भी बंदा ये मिस नहीं करता, बराबर है यार? क्योंकि वो कुछ भी गड़बड़ कर दिया, अनरिकॉग्नाइज रख दिया, तो एम्प्लॉय को तो लगेगा लास्ट में जब विड्रॉ करेगा, वो क्यों चुप बैठेगा? एंड अल्टीमेटली कंपनी थिंक्स ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो, नो? एम्प्लॉयर ही लेगा, मतलब जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है वो लेता. प्रोविडेंट फंड मेंटेन कौन करेगा? एम्प्लॉयर. ही विल ओनली टेक द अप्रूवल. अप्रूवल बड़ी बात नहीं है. वो पीएफ का एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पीएफ रजिस्ट्रेशन, और कमिश्नर को लेटर लिख देते, वो बंदा अप्रूव करके देता. बस 2 मिनट का काम है, कुछ भी चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होता उसमें. करेक्ट? नो. इसमें मतलब गवर्नमेंट को कुछ नुकसान है क्या इसमें? उल्टा फायदा है. अगर 12% ऊपर आए तो टैक्स पे लगाएंगे हम, तो कमिश्नर क्यों चेक करेगा इस पर, उस पर? मतलब दिमाग क्यों चलेगा इसके ऊपर? ही इज हैप्पी नो इफ पीएफ इज क्रिएटेड. व्हाई विल फील सैड? इनकम टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है इसके ऊपर. इंपैक्ट भी आएगा तब अगर 12% के ऊपर है तो. अच्छा क्लियर है एवरीबॉडी? कैन वी प्रोसीड? स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे एवरीबॉडी. चलो एक्सीलेंट, लवली. चलो पुट साइड हेडिंग सेक्शन 7. सेक्शन 7 टाइटल बोलो बेटा. सेक्शन 7 टाइटल इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. Income deemed to be received in India. नीचे लिखो बेटा. The following incomes the following incomes are deemed to be received in India. The following incomes are deemed to be received in India. The following incomes are deemed to be received in India and shall be regarded as
The following income shall be deemed to be received in India and shall be regarded as Indian income. Those barabar? And shall be regarded as Indian income and shall become taxable and shall become taxable and shall become taxable irrespective of residential status. Barabar beta? You got my language, no? Exactly, very good. And shall become taxable irrespective of residential status. And shall become taxable irrespective of residential status. Clear beta? So the first point, right? Employer contribution. Right, what I am telling. Employer contribution to recognized provident fund. Employer contribution to recognized provident fund. Recognized provident fund. Bracket, recognized by income tax department. Bracket, recognized by income tax department. Bracket close. Bracket close. In excess of 12% of salary. In excess of क्या बेटा 12% of salary. So clear है बेटा? Everybody? Right. Second, interest credited in RPF. अभी RPF लिख दो, कोई बात नहीं. Interest credited to RPF. Interest credited to RPF balance. Interest credited to RPF balance in excess of 9.5%. RPF balance. Balance. जितना balance है उस पे. Interest credited to RPF balance in excess of 9.5%. Interest credited to RPF balance in excess of 9.5%. Next, third one. Employer contribution to pension scheme of central government. Employer contribution to pension scheme of central government. To pension scheme of central government notified under section. Notified under section. कौन सी section बेटा? 80cc D. That's it. Clear? Last point. Transfer balance. Transfer balance from the unrecognized provident fund transfer balance from the unrecognized provident fund transfer balance from the unrecognized provident fund transfer balance from unrecognized provident fund to recognized provident fund. बेटा क्लियर है everybody? Bracket right. Employer's contribution plus
प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट देयर ऑन मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट, बराबर ना, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ब्रैकेट क्लोज. आपको एग्जाम्पल्स लिखना है, लिख लो नीचे. एग्जाम्पल 1, वेट 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 वेट, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3. बट ये तीनों एग्जाम्पल लिखने से पहले आप ये लिखो पहले, ठीक है ना, उसके बाद तीन एग्जाम्पल लिखते. हो गया बेटा, लिख दिए. क्या दोस्त, हाँ वो भी लिखना है ना. अरे वही तो कॉन्सेप्ट है, कैसे टैक्सेबल वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल है नहीं, क्योंकि अपने पैसे अपने को आ रहा है, और अपने पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो अदर सोर्स में जाएगा, और जो भाई साहब एम्प्लॉयर ने दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो सैलरी में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने दिया वो, बराबर ना. कौन सा सर, अपन जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा. हाँ दोनों का इंटरेस्ट आएगा ना सर, जितना पैसे डालेंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा ना यार, और अपने पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो अदर सोर्स में जाएगा, उसके पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो जाएगा सैलरीज में, बिकॉज वो दे रहा है, वो देने की वजह से वो इंटरेस्ट आया ना, तो इसलिए वो सैलरी में जा रहा है. जो अपने पैसे पे इंटरेस्ट आ रहा है वो अदर सोर्स में जाएगा. अपने मतलब एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ. हो गया बेटा, चलो एग्जाम्पल्स भी लिख लेना दोस्तों. कैन आई प्रोसीड? थैंक यू. दिस इज एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1,
हो गया ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आरपीएफ वाला 12% के ऊपर टैक्सेबल है. प्रोसीड. This is example 2. सर हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर से, ये ऑलरेडी पता है ना अपने को. अपना कौन सर, ये लॉजिक है यार, ये इसमें कुछ रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थे. नथिंग टू मगअप, इट्स अ प्योर लॉजिक. सी व्हाट वी कंट्रीब्यूटेड, उसको तो टैक्स लगेगा नहीं, बिकॉज इट्स आवर मनी कमिंग बैक टू अस. एंड इंटरेस्ट ऑन व्हाट वी कंट्रीब्यूटेड विल टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. एंड व्हाट एम्प्लॉयर गिव प्लस इंटरेस्ट, सैलरीज. दैट्स इट, बिकॉज दैट्स कमिंग बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर. बराबर है. चलो डन. और एक एग्जाम्पल भी है. सुपर, लिखो.
Super. So done. Can I proceed? Chalo beta, what is section 7 all about? Income deemed to be received in India. कितने पॉइंट है बेटा? 4 points. क्या है 4 points बोलो? Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Then interest credited to that RPF balance in excess of 9.5%. Third one, employer contribution to pension scheme of central government. Notified under section 80 CCD. Last वाला क्या है बेटा? Transfer balance from URPF to RPF. Logic भी clear है ना उसका? बोलो बेटा. Yes दोस्त. चलो बोलो 4 पॉइंट क्या है? हाँ. Yes, madam. What are the 4 points? Employer contribution to RPF, 12% of salary, ठीक है? In excess of 9.5%, very good. कौन सा सेक्शन है? पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सेक्शन पे? 80 CCD. ये तो बोलेंगे नहीं हम, कॉफी डे फैन है, ठीक है? लास्ट ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ. दैट्स इट. दोस्तों क्लियर है? चलो बेटा 4 पॉइंट क्या है बोलो वापस. Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Then interest credited in excess of 9.5%. Third one, employer's contribution to pension scheme of central government notified under section 80 CCD. Last वाला क्या है बेटा? Transfer of balance from URPF to RPF. That's it. दोस्तों clear है? Everybody? That's all. That's about section 7. Pretty simple. Concept है बस और कुछ नहीं. Can I proceed? Chalo, put the heading section 9. We can't complete today because a lot of points are there, but some points will complete today. Okay? Section 7. Title. Sorry, section 7 हो गया. Section 9. Title. Incomes deemed to क्या बेटा? Accrue or arise or asset in India. चलो बेटा क्या है फर्स्ट पॉइंट? इनकम फ्रॉम व्हाट? एनी प्रॉपर्टी और असेट विच इज इन. सिंपल आंसर, इट इज डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया. क्लासिक एग्जांपल, रेंटल इनकम और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ऑन विच वी गॉट ए डिविडेंड और सम डिबेंचर्स आर देयर ऑन विच वी गॉट इंटरेस्ट. सब बराबर है. स्पीक आउट. चलो डोंट राइट एनीथिंग. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डिविडेंड paid by Indian company. Dividend paid by Indian company is obviously an Indian income which is deemed to occur in India. So getting clarity? Everybody, my dear friends, speak out. Income under salaries for service rendered in India. Once you render service in India, what will happen, my dear friends? It is deemed to occur as in India. So getting clarity, everybody? Speak out. These are general points here. Speak out. Next point is very interesting, which you have to get very much clarity here. Which you listen carefully, think properly, and tell me the answer. Then I'll write that. Okay? There is one person, Mr. Rahul. Mr. Rahul, correct my dear friends? This person, Mr. Rahul, he is basically an IAS officer. पता है ना IAS? क्या IAS? IAS officer, Indian Administrative Service. Yeah. This man is posted in Africa. He is posted in what, sir? But he'll work for India. Correct now, sir? अरे yes or no यार? Sir, हर foreign, let me honestly tell you, हर foreign country में India का एक officer है.
बेसिकली वर्किंग एज एन एम्बेसी और कॉन्सुलेट. इंडियन एम्बेसी रहेगा ना सर हर कंट्री में. अरे इतने पिक्चर देखे हम लोग, इतने व्यूज में देखे यार ये कॉन्सेप्ट. हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी होता है. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. नाउ लिसन वेरी क्लियरली हियर. ही इज वर्किंग वेयर? बोलो, Africa. And salary is credited to Africa bank accounts. समझ गया मेरी बात? Accrued where? Accrued where? Accrued in Africa. अरे already I told you, accrue will happen at a place where work is performed. ये भाई साहब काम किधर किया? Africa. Accrued where? Africa. Received where? Africa. What kind of income? Speak out. Foreign income. But they told this is known as an Indian income. I understood your emotions. What they told in the law is salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India is deemed to accrue as in India. That's why इसको बोल रहे हैं हम deemed. Actually accrue कहाँ पे हुआ? Africa. But we are saying deemed to accrue in India. That is the meaning of this word called deemed. Even though it is Africa, still we are saying it is deemed to accrue in India. You're getting my point? Everybody, sir? But one interesting point which I'll write very clearly here. That is salary paid by whom beta? Government of India to an Indian citizen. That fellow should be Indian citizen. Salary paid by government of India to an Indian citizen working किधर बेटा? Outside India. But one important point here. However, allowances and perquisites. Allowance and perquisites का मतलब है something like car facility, home facility. समझ रहे आप? पूरे फैसिलिटीज दे रहे, हाउस रेंट दे रहे, सब कुछ दे रहे, गाड़ी दे रहे यार. अलावेंसेस एंड परक्विजिट डिटेल में पढ़ाऊंगा. व्हेन आई गो टू सैलरी आई विल टेल यू एग्जैक्ट डिटेल बिटवीन व्हाट इज अलावेंस, व्हाट इज परक्विजिट. अलावेंस कब बोले, परक्विजिट कब बोलेंगे. बिकॉज इफ आई टेल यू नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अलावेंस एंड परक्विजिट, दैट ओनली विल टेक हाफ एन आवर टाइम, व्हिच आई डोंट वांट टू डू नाउ. व्हाट योर ब्रेन शुड टेल नाउ इज अलावेंस परक्विजिट मतलब कुछ फैसिलिटीज मिले, सैलरी के अलावा कुछ और मिल रहा है उसको. Detail we'll talk in salary because that only will take half an hour time here. I mean I don't want to waste my time now. I mean it's productive but not now. Timing is so important in here. Yeah. Allowance and perquisite shall be exempt under section 10(7). Exempt मतलब क्या है बेटा? Which is not taxable. It will not form part of your total income. I clearly told you difference between exemption and deduction. Exempted incomes are those which will not form part of your total income. Exempted incomes are those which will not form part of your total income. Deductions are those what we reduce from gross total income. And there are two types of deductions called deduction in the nature of payment, deduction in the nature of income. If in nature of payment directly we will reduce something like ATC, CED. Deduction in nature of income, what will you do? First take it as income, then take it as deduction. Example 80. A. Hey. Interest on savings bank account. Super. Good. That should be the answer. क्या क्लियर है? समझ में आया ये चीज अपने को? बोलो. ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं. Then next point. It will take some time, so detail में पढ़ेंगे उसको. चलो. First point. Income from any property. Sir. Heading ले लिखे आप लोग? Heading लिखे ना? फर्स्ट पॉइंट में लिख दिए क्या आप लोग? ठीक है, अगर आप नहीं लिखे तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो. ऑलरेडी इफ यू रोट ब्रैकेट राइट, ऑलरेडी हु रोट फॉर देम आई एम टेलिंग ब्रैकेट राइट, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, कमा टैंजिबल और इंटैंजिबल. समझ रहे हैं आप? जो नहीं लिखे वो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो. राइट डाउन. इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ब्रैकेट मूवेबल और इमूवेबल. समझ रहे आप मेरी बात? इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ब्रैकेट मूवेबल और इमूवेबल, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ब्रैकेट
movable or immobile, comma, tangible or intangible. Sir, you're getting my point. No, what is intangible? What is intangible? वो लोएस्ट लेवल ऑफ आंसर है वो. सीए का स्टूडेंट ये आंसर नहीं दे सकता. कोई बेटर आंसर दो, थोड़ा सा इंग्लिश मॉडिफाई करके. Intangible asset is that asset. I am sure everybody knows the answer. Intangible asset is that asset where there is no physical shape or form. एग्जाम में ऐसा लिखो, ये मत लिखो वी कांट टच सी फील. नहीं, बहुत गंदा दिखता हो. मतलब it looks so awkward यार. No, when why I'm telling this means your language should change when you come into CA intro level. If somebody asks you what is a liability of partnership firm, if you tell unlimited, that is nonsense. Your answer should be joint and several. Unlimited, sir, meaning वही है, but our language makes a difference, no? सर मीनिंग वही है बट लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है यार. सर स्पीक आउट प्लीज. चलो क्या लिखे आप लोग? इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, कम टैंजिबल और intangible, bracket close, which is situated in India. Which is situated in India. That's it. लिखे तो ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है ना सर? हो गया बेटा? सेकंड पॉइंट, dividend paid by an Indian company. Dividend paid by an Indian company. Dividend paid by an, कौन सी कंपनी सर? Indian company. Exactly. So clear no? Third point, any income payable. Third point, any income payable. Any income payable for services rendered in India. Bracket, salary received for service rendered in India. So now I'll tell one point. You listen first, then we'll write. So one employee worked for 1 year in India. Okay? Since he worked for 1 year in India, they gave 15 days leave to him, which is a paid leave. Which is a, that means even though he does not come to house for 15 days, still he'll get salary. Speak out. And that 15 days salary also is deemed to accrue as in India. You're getting my points? Because the 15 days leave actually came because of working 1 year in India. समझ रहे हम? Full stop. Continue. Continue. It will also include salary for the leave period. It will also include salary for the leave period. LAV, leave period. Leave period which is preceded. Salary for the leave period which is preceded or succeeded. आप समझ रहे हैं मीनिंग? Preceded मतलब पहले, succeed मतलब बाद में. Which is preceded or succeeded. Which is preceded or succeeded by service rendered in India. Which is preceded or succeeded by सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया. समझ रहे? इंडिया में काम करने से पहले या काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला है. क्यों मिला है? इंडिया में काम करने की वजह से मिला है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे क्या? इनकम. इंडियन इनकम. मतलब डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया. वंस डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया, व्हाट विल हैपन? इंडियन इनकम. वंस इट्स इंडियन इनकम, व्हाट विल हैपन? टैक्सेबल फॉर ऑल. आरओआर, आरएनओआर, एनआर. दोस्तों क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर वही जो भी है, व्हाटएवर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट. Salary paid by, इसको स्टार मार्क लिखो ना प्लीज, इंपॉर्टेंट. Salary paid by
Government of India. Salary paid by Government of India to an Indian citizen salary paid by Government of India to an Indian citizen working where, sir? Outside India. Full stop. However, comma, all the allowances and the perquisites, however, all the allowances and perquisites paid abroad. However, all the allowances and perquisites paid where, sir? Abroad. Allowances and perquisites paid abroad shall be exempt under section 10(7). Is clear? Everybody, just take this example. Sir, वो line समझ गए? Even though accrued and received where, sir? Outside India. Still it is regarded as deemed to be accrued in. Exactly. So getting clarity, everybody? Friends, all of us please reply. So what is section 5? Scope of total income. Section 4? Chargeability section. Section 7? Income deemed to be received in India. Section 9? Income deemed to accrue or arise in India. उसमें और 3-4 points है बेटा. 1 point I'll complete today only. Balance 2-3 points I'll complete tomorrow because that 2-3 points will take sweet time. समझ रहे आप मेरी बात? दोस्तों बोलो, सेक्शन 7 में कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट. फर्स्ट वन,
employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Second, interest credited in excess of 9.5%. Third one, employer contribution to pension scheme of central government notified under section 80 CCD. Last one, beta. Transfer of balance from URPF to RPF. What is section 6.1? Basic condition. How many are there? Both satisfied. ROR कहाँ से आया भाई? Resident. One satisfied. None satisfied. Special cases. How many are there? 3. In which special case there is a concept of 120 days? Last one. And 120 days story will come only when total income other than foreign sources is more than. Clarity है ना sir? बहुत क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग. आई एम श्योर वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट्स. पक्का बेटा? श्योर? चलो टेक ए ब्रेक. पोस्ट ब्रेक विल टॉक मोर. थैंक यू.
Yes, get back, my dear friends. Come on. So, friends, what is section 4? What is section 5? Scope of total income. Correct, my dear friends? We are kya? What is section 6? Residential status. Basic condition क्यों बोल रहा है तू? मैं 6(1) बोला क्या? सिर्फ 6 से तो बोला ना. Come on, what is section 7? Income deemed to be received in India. 9. Income deemed to occur as in India. सब बराबर है सर? बोलो बेटा. Are we getting clarity on this point? And why are we trying to understand this concept? हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? इंडियन इनकम है या नहीं है? अगर इंडियन इनकम बन गया तो क्या होगा? सबको टैक्स लगाएंगे. फॉरेन इनकम बनेगा तो सिर्फ आरओआर को पकड़ेंगे. आरओआर को आरएनओआर को पकड़ेंगे सिर्फ 2 केसेस. और आदमी कब आरओआर बनेगा, कब आरएनओआर बनेगा, कब एनआर बनेगा, उसका क्लैरिटी आगे अपने को. स्पीक आउट. बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे. कम से कम 4-5 एग्जाम्पल दिए और 2-3 क्वेश्चन हमें डिक्टेट किया और 3-4 क्वेश्चन बुक में से किए. और भी 1-2 क्वेश्चन बाकी है जो करना है. करेंगे कोई बात नहीं. सर क्लियर है? स्पीक आउट. चलो कितने पॉइंट हो गए? जो भाई कितने भी हो गए. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Gift received in India. Gift received in India. Bracket. If it exceeds 50,000 per annum, not per month, per day, per person नहीं है वो. सबसे 50,000 के ऊपर गिफ्ट आता है तो टैक्सेबल है. You're getting my points? But let me tell you, my dear friends, do not write that. We'll write in detail when I go to other sources chapter. If we get gift from a relative, that is exempt. Who is relative and all, we'll talk in detail separately. Is best friend a relative? Best friends forever? Friends from foundation? Friends from 11th and 12th? Hashtag BF50K, but फिर भी income tax बोलता है taxable है. So clear है? Now I'll ask you one question. Let's say you got a gift from your close friend only, no? Or any doubt? No? Okay. You got a gift of 60,000 rupees. How much is taxable? Bolo beta. Lot old 60,000 is taxable. Gifts, if we exceed 50,000, entire amount is taxable, not excess amount. अब ये शॉक क्यों हो गया था? उतना गिफ्ट देने वाला रहना ना पहले बात. अरे बराबर है यार. Exactly. Chalo. Are we clear, everybody? Speak out. Chalo. Next point. Listen carefully, then we'll write. Rental income from a property which is situated in India. That is also deemed to be received in India. Speak out. But my dear friends, let me tell you, whenever we talk about something called rental income will come under which head of income, my dear friends? Income from house property. But let me tell you, for rental income, we always reduce 2 things from rental income. Number 1, 24A, which talks about standard deduction at the rate of 30%. Next chapter we are going to start with house property only. Standard deduction at what rate, sir? 30%. Now what does that mean? Standard deduction at 30%. If you get a rent of 1 lakh, law is telling don't pay tax on 1 lakh, pay tax only on 70,000. अगर आपको 10 लाख रेंट आया तो 7 लाख पे टैक्स पे करो. आप पूछ सकते सर ये क्यों दे रहे? द रीजन फॉर दैट इज नेम ओनली सेज स्टैंडर्ड डिडक्शन. सर वो घर मेंटेन करने के लिए आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर सबका खर्चा लगेगा सर. कभी कभी रेनोवेशन करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, वाटर पाइपलाइन चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग खर्चा बियॉन्ड एनी थॉट. वील हैव डिफरेंट एक्सपेंडिचर. एक्ट बोल रहा है भैया आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर से हमको कोई लेना देना नहीं है. वी विल गिव यू समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन. दैट इज हाउ मच परसेंट? So whenever we solve a question now, which we are going to do today also, we will find rental income. We should not tax every entire amount. We should reduce 30% and tax only the balance. समझ गए? एक और कॉन्सेप्ट भी आ गया दिमाग में अभी. और एक रिड्यूस करेंगे सर 24B, जो आज तो नहीं आएगा, जब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाएंगे तब आएगा. Which talks about interest on borrowed capital. Classic example Shiva Teja, which I already told you in the classroom. That few months back I purchased a property for which I have taken a housing loan, and whatever interest I am paying for that housing loan, I am taking deduction. सर बराबर ना यार. सर 10 लाख मेरे को रेंट आया सर,
एक्ट क्या बोल रहा है, सीधा सीधा 3 लाख डिडक्शन ले लो आप 30%, बैलेंस कितना बच गया 7 लाख. And you have taken a housing loan to buy the property, and for housing loan you are paying interest of 1 lakh. What act is telling? ठीक है वो 1 लाख भी माइनस करो, बचा कितना अभी 6 लाख, उस पर टैक्स पे कर दो. सेंसिबल है सर. Come on, what are the 2 deductions we'll get? Standard deduction under which section? 24A. Then what is section 24B? Interest on borrowed capital. Beta clear है? Speak out. Everybody, sir. All of us, can I proceed? So whenever you are going to find any question next, we have to reduce 30% and tax only the balance. यहाँ तक सबको क्लियर है? सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन अपन, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे. इतना मेहनत करके इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसा? सर, वी विल बिकम परफेक्ट ओनली व्हेन 3 थिंग्स वर्क. नंबर 1, गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. नंबर 2, यू रिवाइज. नंबर 3, यू प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग. तीनों हो गया तो खत्म. ऑटो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आने का कोई डाउट ही नहीं. क्लियर है बेटा? लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे. ठीक है, बैलेंस पार्ट्स ऑफ सेक्शन 9 tomorrow and we'll close. Chal, listen very clearly, sir. Carefully listen. There is one person X who is in US. There is one person Y who is also in, or let's say we'll shift this fellow to UK. X is having shares of RIL, Reliance Industries Limited. Correct, my dear friends? He transferred that shares or sold that shares to one person Y. US fellow transferred shares to UK fellow. Sir, समझ रहे आप? US fellow transferred shares to UK fellow, but law is telling it is deemed to occur as in India because what is transferred is Indian asset. Other words, technically we are going to write income from transfer of capital asset which is situated in India. समझ रहे हम? ट्रांजैक्शन बाहर हुआ होगा, साइनिंग बाहर हुआ होगा, पूरा भी बाहर हो चुका होगा, बट असेट कौन सा गया भाई? Getting clarity? Speak out. Now one special case I'll tell you. In final you will learn more detail, but inter level I'll give you knowledge on this point. Are you ready? Everybody. There is one company X which is in US. X is holding Y. ये बहुत बड़ा केस हुआ actually. This case, what I'm telling you, is worth close to more than 7,000 crores case. Such a big tax game they played, and after which they brought amendment also in the law. You're getting my point? And the game was played by one company known as Vodafone. Vodafone naam sune? Now it's VI. That's okay because both Vodafone Idea got merged because of all these issues of your Jio. If not, Vodafone was a strong player in the market. Idea, Vodafone, it were very strong players in the market. After Jio has come, life got changed. We are all happy because अपना डेली लिमिट बढ़ गया 2 GB 3 GB. सर पहले तो किसी को पूछते थे भैया हॉटस्पॉट ऑन कर, हॉटस्पॉट क्या नेट तोड़ा ही है. आजकल किसी से पूछो हॉटस्पॉट ऑन कर, एक बार इसके से पूछते बस सब नेटवर्क चालू. बराबर ना? टेक्नोलॉजी गॉन टू दैट लेवल ओनली बिकॉज ऑफ जियो. स्ट्रेट सिंपल आंसर. क्लियर? नाउ लिसन व्हाट हैपेंड इन वोडाफोन केस. लिसन केयरफुली. देयर इज वन यूएस कंपनी. There is one US company which is holding shares in Y. Sir, X is having shares in, let me write like this, X Limited which is in US. ठीक है? Perfect. I agree. Accepted. X Inc which is in US. Correct, my dear friends? He is holding shares in Y Inc which is in Netherlands. ठीक है बेटा? And there is one company called A Inc which is in UK. Example I'm giving. Facts of the case is slightly different. Countries are little different. In that case, there is a country called Cayman Islands and all. I don't want to trouble you now by writing Cayman Islands. वो सब नाम क्यों छोड़ दो? कोई भी कंट्री हो, क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्सेप्ट तो सीखना है ना अपने को. Final level it's important to know because final level they expect you to know the depth of the case. Here you have to have an idea of the case. More for your knowledge. ठीक है? One foreign company sold shares of a foreign company to another foreign company.
समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? Xinc sold shares of Yinc to Inc. Xinc sold shares of Yinc to Inc. One foreign company transferred shares of a foreign company to another foreign company. ये कोई भी एंगल से इंडियन इनकम है क्या? बोलो बेटा. बट इस केस में क्या हो पता है? This Yinc was holding shares in Z. And what has happened was this Yinc was a dummy company. Yinc was a dummy company. मतलब उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. Yinc is basically getting its value from Z Limited. Because Z Limited is there, Yinc has got a value. वरना Yinc में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ बिजनेस ही नहीं है, कुछ भी धंधा नहीं है. But Yinc is getting its value substantially from assets located in India. Yinc has got a value because of Z Limited. Correct, my dear friends? This is actually what has happened in Vodafone case. I changed the names, I changed the country, but concept is this. What has happened is, if a foreign company, listen carefully, please listen, ध्यान से सुनो, ये लिखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लास खत्म, सुनो ध्यान से. One foreign company transferred shares of Indian company to foreign company. ये तो सीधा टैक्सेबल है, ये तो सीधा टैक्सेबल है, साफ दिख रहा है कि इंडियन कंपनी का शेयर्स गया. But what has happened in Vodafone case is, one foreign company transferred shares of another foreign company to another foreign company. अरे समझ रहे आप क्या हो रहा है? One foreign company transferred shares of a foreign company to another foreign company. Indirectly इंडिया गया. सर एक बार ये इधर जाएगा तो ये क्या होल्ड करेगा अभी? Yinc. अब Yinc तो ऑलरेडी Z लिमिटेड को होल्ड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इंडिया गया नहीं गया. But they told it is not taxable. They told this is not taxable. High Court, this matter went to High Court. High Court told this is taxable. Then they went to Supreme Court. In Supreme Court they told not taxable. Because law always covered direct transfer of Indian asset, but they never spoke about the concept called indirect transfer of Indian assets. आप समझे मेरी बात? डायरेक्टली इंडिया गया क्या? इंडिया का शेयर भेजे क्या हम? अरे इनडायरेक्टली इंडिया गया तो मैं क्या करूं भाई? मैं फॉरेन भेजा, इनडायरेक्टली गया तो मेरी गलती है क्या यार? शिवा कंट्रोल. सर समझ रहा है मेरी बात? सी आई ट्रांसफर फॉरेन टू अनदर फॉरेन, इनडायरेक्टली इंडिया गया तो मैं क्या करूं भाई? वो बोल रहा है डमी कंपनी है, कुछ भी नहीं, इसकी बस वाले वो सब मेरे को लेना देना है नहीं भाई. आपने एक्ट में क्या बोला था? इंडियन कंपनी का शेयर भेजूंगा तो टैक्सेबल है. मैंने किसका शेयर भेजा? फॉरेन का भेजा, तो टैक्स क्यों आएगा रे भाई? ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नॉट टैक्सेबल. नेक्स्ट ईयर प्रणब मुखर्जी ब्रॉट अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट टेलिंग दैट henceforth retrospectively from 1/4/1961, if the shares of a foreign company are transferred to another foreign company, it is still deemed to occur as in India if the foreign company derives its value substantially from assets located in India. And transfer shall include and shall be deemed to have always included transfer of rights of management or control or any other rights whatsoever. अब मुझे बोलो, जब एक बार Yinc गया तो Zing को Yinc कंट्रोल करेगा. I mean Z Limited is controlled by Yinc. Now Inc also will control Z Limited. Indirectly तो कंट्रोल कर रहा ना यार. Management, control, any rights whatsoever. अरे यार बोलो यार. Speak out. सर आप समझ रहे ना एग्जाम्पल? See, when Yinc can control Z Limited, automatically Inc can control Z Limited, no? अरे speak out यार. समझ रहे आप मेरी बात? Everybody, I hope you are getting clarity on these points. Everybody, दोस्त, समझ गए ना आप? आप किसी को बोल रहे you like your mother? Yes, wonderful. I also like your mother. Much more fantastic. So getting my point? Or we are telling some aunt, telling that you like your daughter? Wonderful. I also like your daughter. Friends, anyways, jokes apart, I hope you are getting my point, everybody. Sir, I'll give an example like this, layman example. I can control my wife. Control matlab don't take in a wrong sense. I mean to say she'll listen to what I'm telling. My wife parents will listen to what she is telling. Now tell me, can I control my wife parents? Speak out. Control matlab ऐसा वो नहीं है. I mean indirectly control I'm trying to say. I mean we can share a word statement. No wrong sense or wrong statement. You're getting my point what I'm talking? So when Yinc can control Z Limited, it is very clear that Inc also can control Z Limited. Indirectly Indian company gaya nahi gaya. And after that amendment, right now this transaction is taxable. Vodafone तो escape हो गया, Supreme Court बोल दिया not taxable,
बट आज उसके बाद अगर कोई भी बंदा ये गेम खेलता कि बोले फॉरेन भेज दिया, मैंने फॉरेन को भेजा, इंडिया गया ही नहीं, इनडायरेक्टली गया ना रे, बर चुपचाप टैक्स भर. If this foreign company is getting its value substantially from assets located in India. Now, what is the meaning of this word substantially from India and all? See a final. बराबर है. There they gave condition. Market value of assets are more than 10 crores. More than 50% of the value of buying is coming only from Z Limited. Like that they gave conditions. समझ रहे आप लोग? वरना कैसा बोलेंगे यार, सब्सटैंशियल उससे ही वैल्यू आ रहा है. जेडिंग वाइंग क्या बोल रहेगा, अरे सिर्फ उसकी वजह से थोड़ी है, हमारा खुद की भी तो वैल्यू है, खुद के पास भी कुछ है. तो एक्ट क्या बोल रहे हैं, खुद के पास तुम्हारे पास कुछ होगा बट तेरे बिजनेस में 50% के ऊपर उससे ही आ रहा है और इसका मार्केट वैल्यू 10 करोड़ के ऊपर है. ऐसे कंडीशंस दिए उन्होंने जो फाइनल में पढ़ेंगे आप लोग. समझ रहे आप लोग? स्पीक आउट. जब मैं आपको लिखाऊंगा 2 ही पॉइंट लिखाऊंगा. एक तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट लोकेटेड इन इंडिया. Number 2, income from transfer of shares of a foreign company to another foreign company which is deriving its value substantially from assets located in India. That is also deemed to occur as in India. समझ रहे? This is a Vodafone case. Vodafone, there was a company called SR, ESSAR. पहले सुने ना Hutchison SR, Hutch. अरे पहले Hutch था, Hutch Vodafone हो गया. Hutch and ESSAR SR company came together and then they transferred their shares to Vodafone. That's where Hutch SR came together and became Hutchison SR. Subsequently they became Vodafone and now they became VI. आगे जाके क्या होगा नहीं मालूम. सब जाके गंगा में मिलन होंगे. वो गंगा का नाम है जियो. नहीं कुछ भी नहीं कर सकते यार. I mean, he made a price war. He made a price war. Literally war. We used to pay bills of 500, 700, 800 per month. हो गया. अब 600 रुपए में तो literally I am paying 650, 700 rupees for 3 months. 3 months. Now I'm not using Jio. I'm using Airtel. Since a very long time fan of Airtel, so using Airtel only. But still, because of Jio, इन्होंने भी प्राइस कम कर दिया ना ऑटोमेटिकली. अगर मुझे कभी कभी लगता है इसका प्राइस ज़्यादा है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसको फ़ोन करके बोलूंगा भैया मैं पोर्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ जियो. जाऊंगा नहीं, ऐसे ही बोलूंगा. वो ऑटोमेटिक अगले दिन प्लान चेंज कर देगा. ऑल थैंक्स टू जियो. कितने लोग जियो यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ देखो, हो गया सर. मतलब दैट लेवल ऑफ प्राइस वॉर ही क्रिएटेड. वॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा उड़ा दिया उसने. नॉट नॉर्मल. एयरटेल वॉज अ मार्केट लीडर. वोडाफोन वॉज डूइंग गुड बिजनेस. आइडिया वॉज डूइंग गुड बिजनेस. और उन्हें बोला एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. अभिषेक बच्चन आता था टीवी में, याद है ना सर? तब घुस गया और वो भाई साहब लेके वोडाफोन हच डॉग लेके आया. वोडाफोन जू 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 हो गया. जू जू जू. देखिए आप जू जू करके आते थे. इट्स ऑल क्रेडिट टू रिलायंस. वन वे गुड फॉर कंज्यूमर्स लाइक ऑल ऑफ अस बिकॉज आर कॉस्ट रिड्यूस्ड. गुड नो. एंड टेक्नोलॉजी इज एट कंट्रोल. कुछ भी चाहो ओपन एनी ऐप, एवरीथिंग इज रेडी. नेट नहीं है का कोई सवाल ही नहीं है अनलेस वी आर सिटिंग इन दैट एरिया वेयर देयर इज नो सिग्नल. इफ नॉट वी कैन वर्क. Correct, no friends? Did you ever imagine that we'll get something called Paytm, Google Pay, Phone Pay, any pay, APay, UPay, whatever it is? A person can survive even without his wallet for 10, 15 days, 1 month also, provided bank balance is there. अरे बराबर ना यार. वो पे हो, ए पे हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, ओ पे तब भी चालू करेगा तब बैंक में बैलेंस हो, वरना कौन सा भी पे नहीं चलता फिर. सब बराबर सर? That's it. चलो लास्ट पॉइंट फॉर टुडे. लेट्स राइट एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन. चलो बेटा. इनकम फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट income from what sir? Transfer of capital asset. Sir, you please don't confuse yourself between first point and this point. First point whatever we wrote is income from any property in India. वो तो प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है और इसमें क्या बात कर रहे हैं हम? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन हियर. दैट पॉइंट दिस पॉइंट बोथ आर डिफरेंट. क्लियर नो? राइट. क्या लिखा बेटा? इनकम फ्रॉम सिचुएटेड इन इंडिया.
Income from transfer of capital asset situated in India. Getting my point, everybody? Next point. Next point नहीं, नीचे next line में लिखो. Any capital asset, a capital asset, write like this, a capital asset being a capital asset being a share in a company incorporated outside India being share in a company incorporated where, sir? Outside India shall be deemed to have been situated in India shall be deemed to be situated in India if the share derives its value if the share derives its value comma directly or indirectly if the share derives its value directly or indirectly substantially if the share derives its value directly or indirectly substantially समझ गए ना what substantially from the assets located in India. Sir, I hope this example is clear, no? This Y ink is deemed to be accrued in India if what, sir? Y ink derives its value substantially. Wonderful. If Y ink derives its value substantially from what, sir? Assets located in India. बेटा क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? ये एग्जाम्पल लिख लो बेटा, हो जाएगा. यस. बढ़ाना है कम करना है?
Friends, done? Everybody? That's it. There are still some more points in section 9, but which we'll talk tomorrow. Next class we'll discuss that balance points section 9, because at a time I don't want to load too much of concept. Enough. So today what we discussed in concept is section 7 we have done, and section 9 4 5 points we discussed, which are very simple and easy to understand. Clear everybody? Can we proceed? Chalo, open your material. We'll discuss some questions. Come on. Question number 1, 2, 3, 4, 5 done. Is 5 done? I don't think so. 6 is done, no? Sir, yesterday we discussed that 6th one. 6th was the last question what we discussed. I think that fellow is R and O R. R O R. What is that fellow? 6th one we discussed here. R and O R. 730 days is not satisfied. Friends, clear? Can we proceed? Beta bolo beta. Chalo, question number 5. So question number 5, one small correction in that question. Last but one line, are able to see something called 2016-17? Sir, ये by mistake print हो गया बॉस, उस पार्ट को डिलीट कर देना. ठीक है? चलो, get me the answer. So last at the end of the question, please add that total income other than foreign, total income other than what, sir? Foreign sources for financial year 22-23 is 8 lakh rupees. Chalo beta, get me the answer. Come on, please solve. Madam, think properly, apply all the conditions properly, then get me the answer. Okay, no? Just apply all the conditions properly, just check which case will come into the picture, and then based on that you please decide. Okay, beta?
क्या है आंसर? इतना क्या सोच रहे हो यार, इतना सिंपल से क्वेश्चन के लिए भी? क्या है बेटा आंसर? When did he come to India? First of all, he's an Indian citizen. Did he come to India for a visit? Speak out. Will special case apply? One special case apply. We look at what days? 182 days. Correct or not? He has come to India on which date? July 10th. If he has come into India on July 10th, 22, definitely will satisfy 182 days. He will become resident. Correct ना sir? Additional condition तो कैसे भी satisfy करेगा? Because he left India for the first time on 2020. Additional तो कैसे भी satisfy करेगा ना यार? So he'll become what? ROR. And they're asking, does it make a difference if X comes to India on October 10, 22? Huh? Does it make a difference if he comes to India on October 10, 22? ये सॉल्व नहीं करे क्या आप लोग? एक ही सोच के बैठ गए क्या? If he is coming on October 10th, what will be your answer? बोलो बेटा. Sir, if he's coming to in October 10, first of all, बिना कैलकुलेटर को टच करे, easy for stay for less than 180 days, more than 180 days, less than 182 days. कॉमन सेंस की बात है. अक्टूबर 10 को आया तो डेफिनेटली लेस देन 182 days. What will become? Non-resident. But there could be a possibility of 120 days and 365 days. But that 120 365 story will come only when total income is more than 15 lakh. मैंने कितना दिया आपको? 8 lakhs. तो ये भाई साहब का रजिस्टर स्टेटस क्या है भैया? नॉन रेसिडेंट. अगर जुलाई 10th को आता है तो ROR, अक्टूबर 10th को आता है NR. समझ में आ रहा है? याद है आपको मेरे दोस्त को मैं क्या बोला? यू आर एनीवेज गोइंग टू गेट आउट इन अक्टूबर, गेट आउट बिफोर सितंबर. लॉजिक बताया तो आपको मैं क्यों. क्लियर है? सबको क्वेश्चन क्लियर है? आंसर क्लियर है? बेटा बोलो ना यार. चलो स्टार्ट. ऐसे ही दिया है वो. क्यों हम क्या देखेंगे यार? जुलाई 10 से लेके 31 मार्च 23 तक देखने वाले. बराबर कितना दिन आ रहा है? जुलाई 10th ना, तो जुलाई में कितना दिन हो गया? 22 डेज. करना भाई. 22 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, कितना है? 265. बट ये है कितने दिन के लिए? 195. देन व्हाट इज रिलेवेंट फॉर अस? 195. अरे ये सर नो सर, अगर टोटल 195 से कम आता है तो कम वाला ही देखते ना अपन. हाउ मेनी डेज यस कम इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी डेज ही केम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज इंपॉर्टेंट. टोटल आ रहा है अपना 200 के ऊपर. बट ये भाई साहब है कितने दिन? 195. तो हो गया ना 182 डेज के ऊपर. यार बोलो यार. क्लियर है बेटा सबको? यस माय डियर फ्रेंड. अरे ये भैया कब आया? जुलाई 10th को आया. 195 डेज रुक के ये भागने वाला है. तो विजिट के लिए आया ना, तो 195 का मतलब 182 तो सेटिस्फाई हो गया ना यार. तो रेजिडेंट तो बनेगा ही ना. और एडिशनल कंडीशन तो कैसे भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम गया इंडिया से बाहर. फ्रेंड्स गेटिंग क्लैरिटी? कैन वी आंसर इन द एग्जाम? चलो स्टार्ट द आंसर. लेट्स स्टार्ट. कम ऑन. एज पर सेक्शन 6(1). चलो चलो रिवाइज करते फिर वापस लिखते पूरा. एज पर सेक्शन 6(1). कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखेंगे. As per section 6(1), an individual shall be regarded as an individual shall be regarded as an individual shall be regarded as resident if he satisfies. An individual shall be regarded as resident if he satisfies any one of the basic condition.
Correct, Nair? If he satisfies any one of the basic condition. ठीक है, पूरा लिखना है कंडीशन वापस चलेगा. नेक्स्ट लाइन फर्दर, नेक्स्ट पैराग्राफ फर्दर. एग्जाम में पूरा लिखना है कंडीशंस, ठीक है ना. फर्दर कमा, further comma, if an Indian citizen or a person of Indian origin, further if an Indian citizen or a person of Indian origin comes to India for a visit during the previous year, then he is regarded as a resident only if then they are regarded as a resident only if क्या बेटा, only if first basic condition is satisfied. Correct? No? Full stop. However, if his total income ब्रैकेट अदर देन फॉरेन सोर्सेस, पता है ना अपने को उसका मीनिंग क्या है. फॉरेन सोर्स में अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड. या however is total income other than foreign sources, bracket close, other than foreign sources during the financial year exceeds 15 lakhs, 15 exceeds 15 lakhs, then he shall be regarded as a resident. बराबर, he shall be regarded as a resident if he stays in India for 120 days or more. Friends, getting clarity, no? If he stays in India for 120 days or more during the previous year, 120 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Clear? Next paragraph. In the given case, comma, X is an Indian citizen who has come to India for a visit during the previous year. In the given case, X is an Indian citizen who has come to India for a visit during the previous year, and his total income
and his total income bracket other than foreign sources his total income bracket other than foreign sources does not exceed कितना बेटा 15 lakhs. Next paragraph. Hence, X shall be regarded as resident hence X shall be regarded as resident only if he satisfies the first basic condition. Correct? No? Only if he satisfies the first basic condition. Sir, I hope we are getting clarity. We have to present like this in the exam, only then full marks will come. If not, marks will not come, my dear friends. Please understand. You know that I know that you know. But I say I will know only when we write. Please, next line. If X comes to India on July 10th, 2022, if X comes to India on July 10, 2022, if X comes to India on July 10, 2022 for a visit of 195 days, correct? No? (195 days), then he shall be regarded as ROR. Then he shall be regarded as ROR, since he can also satisfy additional conditions. Since he can also satisfy additional conditions given under section. Given under section. Which section, sir? 6(6). Clear? Next paragraph. If X comes to India on October 10, 2022, what did it write, sir? If only if X comes to India on October 10, 2022, then he shall be regarded as क्या बेटा? Non-resident. Clear? Everybody? Can we proceed? Chalo, done. Question number 5 is over. So 1 to 6 all done, no? Beta bolo. Seventh question. बाद में देखते हैं. Eighth one also we'll see later. Page number 40, question number 13B. Question number 13B. So, देख रहे हैं question? Can we start looking at it? Chalo, what is that they have given? Mr. Sachin is settled in where? Sachin is settled in Australia in the year 19
90, तो उसका स्टेटस क्या होगा बेटा? बोलो, थिंक प्रॉपर्ली एंड टेल मी. He settled in Australia. Will he be ROR, RNOR, NR? Huh? Obviously NR. He cannot satisfy any basic condition. सीधा आंसर है NR. कोई डिस्कशन नहीं है उसमें तो. Speak out. अगर ये बंदा NR है, what is that they're asking? Compute is what income? हम कौन सा इनकम को इधर टैक्स करेंगे भैया? ओनली, बराबर. देखो क्वेश्चन प्रॉपरली. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया but received in Australia. What is the nature of income? Speak out. Definitely it is Indian income. Next. Interest on savings bank deposit in Indian bank. Interest on Australia bonds, only 50% is received in India. 50% इंडिया में रिसीव हुआ, मतलब बाकी 50% कहां पे रिसीव हुआ? That means what? 50% is Indian income and balance 50% becomes foreign income. Yes or no? Speak out. To check Indian and foreign, what we'll see? Only two parameters: accrued, received. दोनों में से कुछ भी इंडिया में है इंडियन इनकम, दोनों इंडिया में इंडियन इनकम, दोनों बाहर है फॉरेन इनकम. बारे में सही है बेटा? Friends, are we getting clarity on this point, everybody? Next, dividend from Indian company received in Australia. ये तो सेक्शन 9 में अभी पढ़े हम लोग. Dividend from Indian company is deemed to occur as in India. बेटा देखिए अभी. Yes. बोलो. Next point. Profit from business in Nagpur, but managed directly from Australia. Huh? Without second thought, Indian income. क्यों बेटा? बिजनेस इंडिया में तो अक्रू इंडिया में होगा ना भाई. We'll look at only two parameters. Accrued, दोनों अगर इंडिया में, दोनों में से अगर एक भी इंडिया में, दोनों बाहर है. Exactly. I hope you are getting clarity. Right. Short term capital gain on sale of shares of Indian company received in India. अगर received outside India होता तो भी हम Indian income ही बोलते हैं उसको. Even if they would have told received outside India, still answer would have been Indian income only, no? Because बेचे क्या अपन? Shares of Indian company, तो Indian income तो बन ही जाएगा ना यार. दोस्तों, वंडरफुल, मजा आ रही है सर. ये इजी है या रेजिडेंट स्टेटस इजी है? ये इजी है, बट ये करने के लिए ना सबसे पहले अपने को स्टेटस पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं. समझ गया मेरी बात? तो दोनों इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट, agriculture income from land situated in Punjab, but let me tell you, this income is exempt under one section called 10(1). next chapter I'll teach you is agricultural income. वो चैप्टर नहीं है एक्चुअली, exemptions बोल के एक चैप्टर है, उसमें 10(1) बोल के एक है. बट व्हाट आई हैव डन इज, इफ यू सी माय बुक इंडेक्स, आई सेपरेटेड एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर. मैंने जानबूझ के किया वो. एग्रीकल्चर इनकम को एक बोल के कोई अलग चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में. इन योर सिलेबस, इन एग्जामिनेशंस ओनली देयर इज एग्रीकल्चर इनकम टॉपिक आल्सो, बट इंटेंशनली आई सेपरेटेड बिकॉज बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, उसमें तो स्पेशल पॉइंट्स तो दिखना पड़ेगा. छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है वो. अच्छा, आप पेज नंबर देख लिए क्या? ठीक है, 3-4 पेज, कुछ भी नहीं है उसमें. अपने अपन ये समझिएगा एग्रीकल्चर इनकम होता क्या, अगर आदमी में एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स कैसा करेंगे. बट इन जनरल एग्रीकल्चर इनकम इज exempt अंडर विच सेक्शन? 10(1). गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज. नो सर, अरे यार एग्रीकल्चर है यार, मीन कम ऑन, बैकबोन ऑफ इंडिया. किए कभी एग्रीकल्चर? गुड. 10(7) क्या है बेटा? 10(1) तो एग्रीकल्चर इनकम हो गया. 10(7) क्या है? ना साइलेंस मेंटेन करते हैं. अलावेंसेस एंड सैलरी नहीं है वो. अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया. उतना स्टोरी है. आप सैलरी सैलरी बोल रहे, सैलरी नहीं है एग्जाम्शन. एग्जाम्शन सिर्फ अलावेंसेस एंड परक्विट्स को है. दोस्तों बराबर है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो. रेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन भोपाल, इंडियन इनकम. भोपाल किधर है भाई? इंडिया में. ठीक है, मध्य प्रदेश में, कोई प्रदेश में भाई, इंडिया में ही है ना. बट फ्रॉम दिस 1,25,000 आई विल रिड्यूस 30% एंड टैक्स ओनली द बैलेंस. दोस्तों बराबर है? बट इन एग्जाम समटाइम्स व्हाट दे डू इज, हियर इन द ब्रैकेट दे विल राइट द वर्ड
कंप्यूटेड, अगर कंप्यूटेड दिए इसका मतलब क्या है, 30% ऑलरेडी उन्होंने माइनस कर दिए, बट यहाँ पे कंप्यूटेड दिए क्या, तो हम खुद माइनस करेंगे। समझ रहे आप मेरी बात? बेटा बोलो, सॉल्व करें इसको। चलो सिंपल, 2 मिनट में हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इन द गिवन केस, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर फॉर 13B, 13A बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है? राइट डाउन। इन द गिवन केस, मिस्टर, कौन है भैया? सचिन, Sachin is settled in Australia. Mr. Sachin is settled in where, my dear friends? Mr. Sachin is settled in Australia since 1990. Full stop. Hence, he cannot satisfy any of the basic condition under section 6(1). बराबर ना सर? Hence he cannot satisfy any of the basic condition under section 6(1) and shall be regarded as what sir? Non-resident. सर अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या लिखेंगे हम, मस्त लिखेंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ। या नेक्स्ट पैराग्राफ, एज पर सेक्शन 5, समझ रहे हम क्या है बेटा सेक्शन 5? वंडरफुल। एज पर सेक्शन 5, कमा, a non-resident, as per section 5, a non-resident is taxable. As per section 5, a non-resident is taxable only in respect of, as per section 5, a non-resident is taxable only in respect of Indian income. बराबर है बेटा? As per section 5, a non-resident is taxable only in respect of Indian income. That is, you write IE, correct? No? IE dot, comma. That's how you present it, right? That is income accrued. That is income accrued or received. Income accrued or received or deemed to be received. Income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. Barabar? Good. Income accrued or received or deemed to be received or deemed to occur or arise in India. Income accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. I hope we are clear, my dear friends. बेटा बोलो, नीचे एक 3 कॉलम लेंगे, बट हेडिंग विल राइट कंप्यूटेशन ऑफ, नीचे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ क्या सर? टैक्स पूछा क्या वो? टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट हियर, यू कैन राइट AY. Computation of total income for AY 23-24. बराबर सर? Below take 3 columns, sir. Listen to the columns once. Particulars, nature of income, amount in rupees.
Can we proceed? Speak out, sir. चलो, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है बेटा? फीस फॉर technical services rendered in India, received in Australia. बेटा क्या है नेचर ऑफ इनकम? इंडियन इनकम. बराबर ना यार? चलो, अमाउंट कितना है? 75,000. I hope you got the presentation. Next. Interest on savings bank in India. क्या है बेटा नेचर ऑफ इनकम? इंडियन इनकम. फिगर 12,000. Sir, see this presentation once. Interest on what bond, sir? Australian bond. So once I can see here once, please. So please see here once. 50% received in India. 50% received outside India. बराबर सर? 50% received in India. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कितना है बेटा वो? 55,000 divided by 2. 27,500. And this becomes what income? Foreign income. For which I'll put dash. समझ गया मेरा presentation? Clear है ना बेटा? That's it. Simple. I hope you are getting clarity. And this is not at all difficult. Correct, no? But to do this perfectly, status is important. Residential status. बराबर है ना? और क्या पॉइंट है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of shares of Indian company. ये तो क्लियरली इंडियन इनकम है. Agricultural income from land in Punjab. So agriculture income is exempt only if it is from a land in India, sir. Clear, my dear friends? Agriculture income is exempt only if it is from a land in India.
How much is 1,25,000 minus 30%? Sorry, 87,000. बेटा डन? यस, टोटल बताओ मुझे. ग्रॉस टोटल इनकम how much? 4,15,000. आंसर नहीं हुआ बेटा. लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. ये भूल नहीं सकते ना हम. बेटा बोलो क्या है, क्या मैनेज करना है अपने को. इंटरेस्ट ऑन व्हाट अकाउंट? 80 TTA. कितना है इंटरेस्ट अपने को? 12,000. कितना लेंगे डिडक्शन? 10,000. व्हाट इज द आंसर? 4,05,000. This becomes my total income. सर आई होप वी गॉट अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट नाउ. ये चैप्टर का पूरा कहानी समझ में आया होगा. अभी क्या करना चाह रहे हैं चैप्टर में? वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड which income is taxable, which income is not taxable based on the residential status. और 80 TTA कहानी तो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका मैं. फर्स्ट चैप्टर इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे पता है ये हर जगह आता है अपने पीछे 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 पीछे. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट where deduction is the interest or 10,000 whichever is. इसमें 12,000 है तो 10,000 लेंगे. क्या हुआ? कुछ लिख रहे क्या अभी भी? बोलो क्या लिख रहे हैं आप? हाँ, SBI अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट ही है. जगह नहीं तो SBI अकाउंट लिख दिया मैंने. एडजस्ट कर लो. सर क्लियर है एवरीबडी? चलो आई गिव यू 5 minutes टाइम. गेट मी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में सर, क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार पहले. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो. सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? बेटा बोलो बेटा, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन अभी जो सॉल्व करें हम? 13th क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में देखो. आई मेड योर वर्क मोर सिंपल. व्हाट इज दैट आई एम आस्किंग? कंप्यूट टोटल इनकम अज्यूमिंग ROR, RNOR, NR. तो अपने पता लगाने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट है ना सर? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप? टेक 5 कॉलम्स. पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ इनकम, ROR, RNOR, NR. समझ गए आप? देन विल सॉल्व इट. आप सॉल्व मत करो, सोचो पहले. एक एक पॉइंट पढ़ के आंसर क्या आएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है. ठीक है? एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें. थर्ड वाला पॉइंट सोच लेना पहले ध्यान से.
हो गया, डिस्कस करेंगे. चलो बोलो. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, फॉर whom will tax? Huh? All. Why? This is what kind of income? Definitely this is an Indian income. सर चुन्नू क्वेश्चन है ये. सेकंड, डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका, फॉरेन इनकम. किसको टैक्स करेंगे? ROR. RNR को टैक्स करेंगे क्या? ओनली फॉर 2 cases. थर्ड, रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन UK, deposited in a bank in UK, later on remitted to India through approved banking channels. Indian income है, foreign income है ये? Speak out. 100% this is a foreign income. You have to very clearly understand that what is important is only accrual and receipt. Remittance is not important. Receipt means the first receipt. Second receipt is second transfer is called as a remittance. Remittance से हमको कोई लेना देना है नहीं. हमको सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, accrual and receipt. Accrued where? UK. Received where? UK. It's what kind of income then? Foreign income. Remittance is of no relevance. Only accrual, receipt is of importance. Remit करने का कोई लेना देना है नहीं यार. So getting my points? तो किसको टैक्स करेंगे हम? ROR. Good. Dividend from SK Limited Indian company. Indian income, but is exempt under section 10. बोलो 1. That's it. चलो सर, ये बहुत सिंपल इजी है. बोलो. रजिस्टर स्टेटस इजी है, ये ज्यादा इजी है? ये ज्यादा इजी है ना. कभी कभी एग्जाम में ना ये लोग रजिस्टर स्टेटस पूछते ही नहीं, सीधा बोलते हैं, ऐसा पॉइंट्स देते हैं. अभी 11th क्वेश्चन देखो एक बार, हम कल सॉल्व करें फिर भी देखो. उसमें क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम ओनली, ROR, RNOR, NR, ऐसा पॉइंट्स देते. समझ गए? और जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना सर, 4 मार्क को नहीं आएगा, 6 to 7 मार्क्स के लिए आएगा. दे आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड आउट ROR, RNOR, NR. उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? ये इनकम्स को ROR है तो क्या होगा, RNOR है तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा. ये तो कुछ भी नहीं है. सेक्शन 6 से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, सेक्शन 5 दिमाग चलाना है अपने को. बराबर ना यार? और कभी कभी दोनों कंबाइन करके पूछते, जो हम कल सॉल्व करेंगे. समझ गए? दैट्स इट. चलो लेट्स सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 12. सब 2 मिनट प्लीज, सॉल्व करके जाएंगे ना, 2 मिनट्स. पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ इनकम, ROR, RNOR, NR. एक ही टेबल में सॉल्व करेंगे यार, 2 टेबल क्यों करना है? सब बराबर ना यार? We'll solve in one table only. चलो फर्स्ट वन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी. क्या है बेटा नेचर ऑफ इनकम? इंडियन इनकम. कितना है? 25,000, 25,000, 25,000. तीनों कॉलम में आएगा सर. कल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग. 4-5 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, हो जाते परफेक्ट. क्लियर ना दोस्त? नेक्स्ट. डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका. क्या है बेटा नेचर ऑफ इनकम? फॉरेन इनकम. कौन सी कॉलम में दिखाएंगे? ROR. बाकी दोनों को डैश लिख दो. फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम. सर ये कौन कौन बराबर सोचे सर कि रेमिटेंस से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ अक्रूवल रिसीट इंपॉर्टेंट है? थोड़े लोग सोचते बैठ गए थे रेमिटेंस से क्या होगा. कुछ लिंक नहीं है, ओनली अक्रूवल एंड रिसीट. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन UK रिसीव्ड इन कहाँ पे बेटा? UK. क्या है बेटा नेचर ऑफ इनकम? तो किसको टैक्स करना है अपने को? सिर्फ ROR. कितना फिगर है? 1,05,000. पूछो मत मेरे से कैसा आया.
Don't ask me how I got that figure. How? 1,50,000 minus 30% under section 24A. बराबर ना? स्टैंडर्ड एक्शन. अगर क्वेश्चन में बोलते कंप्यूटेड तो हम फिर माइनस करेंगे क्या? नहीं. कल एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें लिखेंगे वो लोग कंप्यूटेड. सर 11th क्वेश्चन देखो ना एक बार. 6th पॉइंट पूरा मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो. रेंटल इनकम ब्रैकेट में क्या लिखे बेटा? कंप्यूटेड. फिर माइनस करेंगे 30%. नहीं करना. समझ गए ना आप लोग? उसका मीनिंग क्या है? कंप्यूटेड मतलब डोंट रिड्यूस 30% अगेन. दैट्स इट. कम बैक. नेक्स्ट. Dividend from Indian company, and of course that income is an Indian income. No second thought about it. क्या है बेटा? 12,000, 12,000, 12,000. I hope we are clear. Next. Agriculture income from land in Madhya Pradesh. This is an Indian income, but it is exempt. कौन सा सेक्शन बेटा? 10(1). 10 बार सुनेंगे 10(1), 10(1), 10(1), 10(1), ऑटोमेटिकली अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा यार. ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल एफर्ट लेना पड़ेगा. आवर ब्रेन विल रिमेंबर. गॉड हैज गिवन अ ग्रेट ब्रेन टू अस. कोई डिडक्शन है क्या इसमें? तो सीधा टोटल इनकम ना. कोई डिडक्शन है तो फिर हम लिखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. बोलो बेटा आंसर क्या है? 1,62,000. नेक्स्ट. 37,000. 37,000. Sir, I strongly believe we got a clarity on this question. I intentionally stopped you for 5 more minutes and solved this question only because we'll become perfect in R over to kya hoga, RN over to kya hoga, NR to kya hoga. I hope we got a great amount of clarity on this concept, everybody. Are we enjoying this, my dear friends? Now, what is left in this chapter is only, my dear friends, section 9, 2-3 special points are pending to talk and some 4-5 questions to solve. If we do that, chapter is over. 4 to 6 marks in pocket. कभी कभी 6-7 मार्क्स को भी आ सकता है. एक बार 8 मार्क्स को आया एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए. मतलब 10-15 इनकम्स हैव गिवन एंड आस्क्ड आर ओवर तो क्या होगा, आरएन ओवर तो क्या होगा, एनआर तो क्या होगा. जब कॉन्सेप्ट क्लियर है 8 मार्क के लिए आए तो एग्जाम में खुश होना चाहिए एक्चुअली अपने को. बराबर ना यार? बिकॉज बाय सीइंग दैट, सी इन एग्जाम इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट दिस कॉलम इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इंडियन फॉरेन इनकम. इंटेंशनली आई एम मेकिंग यू राइट सो दैट आपको भी क्लैरिटी आ जाएगा. क्लियर है ना सर? थैंक यू सो मच. टेक केयर. सी यू टुमारो. बाय बाय. और 2 नोट लिखते हैं आंसर को प्लीज. 1 मिनट. 1 स्मॉल पॉइंट. जस्ट राइट 1 नोट लिखेंगे उसके लिए. और उससे पहले एक और नोट लिखना है. टू डिसाइड इंडियन इन आंसर के नीचे नोट लिखना है. टू डिसाइड इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, to decide Indian income or what sir? Foreign income, comma, accrual and receipt is important. Accrual and receipt is important. Accrual and receipt is important, but not remittance. बराबर ना यार? Accrual and receipt is important but not remittance. Note 2.
in case of rental income, in case of rental income, in case of rental income, comma, standard deduction at 30% is allowed. Standard deduction at 30% is allowed as per section 24A. पता है ना कैसे लिखना है 24A? Standard deduction at 30% is allowed as per section 24A. Clear? And that point I am not making you right. अगर क्वेश्चन ने कंप्यूटेड बोल दिया इसका मतलब है कि 30% ऑलरेडी माइनस कर दिए. That point I am not making you right. Clear no? Thank you so much guys. Take care. See you tomorrow. Thank you.